Okay, so what we are doing today is part of the practical file questions for your class 12 AI. And so what I need to show you is the questions first, which we are going to refer to, right? So let me open that file. Give me just 1 minute. And then we move on to the Google Colab, जहाँ पे हम लोग करेंगे उसको, ठीक है जी? So what I had prepared as the practical file questions is this. Okay, just a reminder of the format also, that the way the exam will be conducted. That's also there. Okay, so these are the things which we have to get ready for our practical exam. Okay. The practical file, which is 10 marks, जिस पे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, where I'm saying that we are going to have the CSE file made and then we do a few Pandas questions on that, data visualization and the orange data mining tool questions also. ठीक है? That's a basic thing. You may add NumPy tool, you may add other things to questions also, but this is the minimum thing at least we want to keep there. Then the project file of 25 marks. अभी तक हमने कुछ नहीं किया उस पर. So we'll do that. And then there's this exam of 10 marks, which will be conducted on the exam day, practical exam day with the external examiner. Okay. So it'll be a similar set of questions given to you to be done on pandas and orange data mining also. ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस ऑन हैंड होना बहुत जरूरी है. And then there'll be a viva based on your project and your practical file, which is a 5 marks. So that makes a total of 50. That's how your practical file works, right? Now the questions which I had prepared was this. This has the basic pandas operations, जितना हमें at least पता होना चाहिए. So I'm talking about a CSV file to be created and name it as sports.csv. ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा है that we can do that in Excel, we can do that in Notepad also. So let us quickly create this file first, right? You also have this data available with you in your GCR. You can download that, keep it handy, and create this file first because CSV चाहिए हमें. I've tried to put some missing values also because हम लोगों ने जो first unit में सीखा था how to delete I mean how to check for the NaN values and how to remove them, all that is there. Fine. तो सबसे पहले Excel खोलो, as simple as that, and create the data. So I'm opening my Excel and I think I have this file ready because I had created that. So this is how I'm going to create the data. ठीक है? If not the whole thing, at least create partially, जल्दी जल्दी थोड़ा सा. And then you'll save it as, look for that, that is important, save as whichever location you want to save. So I'm going to my defined location itself and try to pick up, not try, you have to pick up from the save as type जो आपका इसके corresponding जो list box है उसमें से you have to pick up the CSV comma delimited. Don't leave it at the default because default is Excel workbook and Excel workbook हमें नहीं चाहिए, हमें CSV फॉर्मेट में चाहिए, right? So this is what we pick up first and then we save it. I already have it saved, so I'm not saving it again. Once the data is ready, then we try to move on to Google Colab first. ठीक है? Then we'll start. So let's open Google Colab. Beta, you open Aditi the Jupyter.
Or you also want to work on Google Colab, it's your wish. As usual, मैंने सर्च पे लिखा very basic, and then I go to welcome to Google Colab. Okay, this is where I am. I'm not opening anything. I create a new notebook. So it's available here. New notebook. It shows me loading and it opens it for me. Okay. So here we are going to write the code, like as simple as that. Print basic print statement अगर हम लिख के देखें. And then I ask him to run. And it's giving me the output. ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे करके ये वाला स्क्रीनशॉट विद द कोड एंड द आउटपुट हम उसको पिक कर लेंगे. एंड यू मे सेव योर डेटा so that next time when you pick up, so you can say that, well, yeah, practical. Right. Fine. So plus code. It's like a Jupyter notebook only. इसमें हम लोग टेक्स्ट पे नोटबुक का वही कंसेप्ट होता है दैट आई कैन राइट टेक्स्ट आल्सो एंड आई कैन राइट माय कोड आल्सो आई कैन कीप द होल यू नो मटेरियल विथ मी एक्सप्लेनेशन विद द कोड एंड द आउटपुट आल्सो. सो अभी मुझे कोड चाहिए यहाँ पे तो आई हैव डन अ क्लिक ऑन दिस इंसर्ट कोड सेल. So it has created this for me. There is a shortcut also for this. Control plus MB, capital MB. तो उससे हम लोग इसको कर लेंगे. ठीक है. अब बात आती है सीएसवी को अपलोड करने की. Because otherwise, how will it do it? If I give him a, location of my machine, it will not be able to pick up the file. Right? Have you all reached till here? Have you reached till here? Naisha and Aditi? Yes, ma'am. Naisha, what about you? Yes, ma'am. Okay, great. So I have kept the sample solutions also here with you so that we can be a little faster. So your Excel is done. Okay. I've marked it up that in the form of a CSV file, you're going to save it. And then these are my solutions. Okay. I did it in the Pandas of my machine, but now I'm going to do it in the Google Colab. Right? So chaliye, my first question says that I have to write a Python program to convert the given CSV file into a data frame, making PID as the index. तो ये वाला जो कॉलम है इसको वो इंडेक्स बना दे और बाकी वो पूरा का पूरा डेटा मेरा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स रहेगा इन माय डेटा फ्रेम. ठीक है. तो टू डू सो आई नीड माय सीएसवी इन दैट एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हम सीएसवी को अपलोड कैसे करेंगे. सो यू हैव दिस फोल्डर हियर. ओके, क्लिक ऑन दैट. आपका लेफ्ट पेन में देयर इज अ सेपरेट विंडो व्हिच इज ओपनिंग. ओके, एंड देन यू हैव दिस अपलोड ऑप्शन. ये वाला जो एरो मार्क दिख रहा है. Click on this. Then go to the location where you have the folder. Sorry, you have the file. Of course, the folder and then within that the file. Now, where did I keep file? Here it is. I repeat again if you have missed out. You go to this files option here. Click on that. Then you have the upload option. Click on that. Then you go around doing the searching of your folder. For me, it's this folder. Within that, this folder. And within this, I find my file, which is this one. Open.
They say that ensure that your files are saved elsewhere because this is just for this session that he's uploading the data for me. जब आप इसको क्लोज कर दोगे तो ये फाइल वो हटा देता है. इट डजंट कीप. ऐसा ना हो कि आपने उसका कॉपी नहीं रखा. ठीक है. तो हम तो उसको मशीन पे सेव करके अपलोड कर रहे हैं. हम डायरेक्टली कहीं से लेके तो अपलोड नहीं कर रहे हैं. तो हमारे पास कॉपी है. सो इट हैज गिवन मी द post.csv here and you can actually open double click that तो वो दिखा भी देगा कि हाँ मेरा डेटा आ गया आउट है. राइट. आई नो Yes, दैट इट ma'am. इज करेक्ट. हो गया इतना. Yes, ma'am. ओके ग्रेट. नाउ लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग अप द डेटा एंड यूजिंग इट. तो अब हमें इसके पास ये डेटा है तो आई डोंट हैव टू गिव एनी पाथ टू हिम. वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द file name. Now, what is the code here? I'm creating a data frame. So the by default, generally we take df as the name, or you may take df1, you may take sports, whatever is your wish, you may take that. But my command, first of all, sorry, we have to say import pandas. That is important. So import pandas as pd. Then we will read the CSV. So हमारा जो function है to pick the CSV file and create the data frame out of that, that is read underscore CSV. So that is what we are going to pick up. Please say that df is equal to pd dot read underscore CSV. In the bracket, I'll give the name of the file, which is sports dot CSV. Don't forget the extension here. That's important. And one more thing I want to tell him that my index. जब हम यहाँ पे देखते हैं तो I've given you this thing that in my question it says index. अच्छा sorry, I mean in my question it is index has to be the first column. ठीक है. तो first column as per the Python setup we go by first column is the 0th column. Similarly first row is the 0th row. तो हम इंडेक्सिंग जब करेंगे तो मेरा जो पोजीशन देता है वो रो और कॉलम को that starts from 0. So index underscore call is the parameter which I'm going to use in order to do my work. So here I mentioned index underscore call is equal to 0 at the column. We will give the name also, but we generally prefer to do this. This should read my file. Let's check whether it has done it or not. Now I ask him to print. Now post doing that, I say run. And it has picked up. और आप देखोगे कि इस PID को इसने अलग से यहाँ पिक कर लिया. ऊपर वाली लाइन में PID is not being shown as the heading. So I know that this has been picked up as the index. हम इस पे कुछ कमांड वैसे भी ट्राई करके देख सकते हैं. Like I'm saying print, you have done these attributes. थोड़ा बहुत we have to remember. df dot shape. Shape tells us what? Attributes don't have half circles after that, so I don't need it also. 6, 5. So 6 columns or 6 rows. 6 rows. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first confusion should always be eliminated. The difference between row and column. I ask you to remember that the rows are like this. Row, no. Best way to remember. And column is the other one. Row similar to no. Okay. And it is my like this. ठीक है. Horizontal वाला. और ऊपर वाला है column. तो 5 columns are there and 6 rows are there. ठीक है. इसका इंडेक्स क्या है वो भी हम इंडेक्स वाले एट्रीब्यूट को यूज करके चेक कर सकते हैं. Again, run on the indexes are these. So you know that your thing has been set as per the question. मैंने index बना दिया इसका डेटा फ्रेम का. ठीक है. So this is done. I'm deleting them. I don't need it again. So आप ऐसे ही लाइक प्रिंट का कमांड तक लिखा और इस वाले का इतना पोर्शन टेक द स्क्रीनशॉट and paste it in your document. Fine.
I have not done that in that solution sheet because I wanted you to do it yourself once and then pick up the answers, the screenshots also. Okay. Now let's move on to the next question. It says we have to add a new record. Add another record of your choice. देखिए 1007 वाला एक रिकॉर्ड हमें ऐड करना है, तो हम क्विकली ऐड कर लेते हैं. उसके बाद हमें एक कॉलम ऐड करना है टू पिक द कोच. Ma'am, I actually have to go. I have another class at 9:30, but will you upload this recording in the group? Yes, I'll do that. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Okay. So Naisha, let's move on. I add another record. Yes, ma'am. चलो. Okay, ma'am. हाँ करो. ये रहा आपके पास फॉर्मेट उसका. वेरी सिंपल. हम जब रिकॉर्ड्स पे काम करेंगे हमेशा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एलओसी पे. एलओसी इज माई इंडेक्सर. रो कॉलम दोनों मेंशन करके एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ सेट करना है एलओसी, और डायरेक्टली कॉलम को एक्सेस करना है. देन इट इज अ डायरेक्ट एक्सेस with the square brackets. I mean, of course, you can use LOC also, but this is easiest. Directly. जब कॉलम को एक्सेस करना है तो df स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम नेम, और उस पर हम लोग कॉलम के जो भी वैल्यूज है वो असाइन कर देंगे. रिमेंबरिंग द फैक्ट कि मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया है, तो इंस्टेड ऑफ 6 आई विल ऐड 7 वैल्यूज व्हेन आई डू इट. तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक और रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिया था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मुझे वैल्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज मिसमैच आ जाएगा. ठीक है. सो पहली बात हम करेंगे एलओसी वाली कहानी. सो लेट अस डू दैट. हमें एक रिकॉर्ड ऐड करना. तो df डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर. सो 1007 इज इक्वल टू, अब उसके वैल्यूज दे दो. सबसे पहले p नेम, सो लेट मी ऐड माय नेम ओनली. ओके, कॉमा, स्पोर्ट्स. I know how to play badminton, at least to some extent. Very much. Okay, I belong to India. And now please keep that track that आपने बाकी सारा डेटा कैपिटल में दिया, because you know Python is case sensitive. तो इसीलिए बाकी सारा डेटा अगर कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में रखो, अगर बाकी सारा डेटा स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में रखो. ठीक है. वो चेंज कर लो डेफिनेटली, अदरवाइज फिर बाद में हमें कहीं पे. वैसे तो कॉलम नेम्स वगैरह यूज करेंगे हम लोग, बूलियन इंडेक्सिंग तो यूज नहीं कर रहे हैं इसके अंदर. मुझे डेटा आप पिक करना है, बट स्टिल it look good also in LPS, है ना. So let's keep the same format, whatever you have taken while creating the data. And of course, if your whole data is not ready, तो आप accordingly number दे दो. ठीक है, या फटाफट बना लो साथ साथ, so that you Okay, won't ma'am. get confused later. नाम का कमांड तो कुछ और बोल रहा है और मैं कुछ और बोल रही. ठीक है. So you have Sushmita here, then you have sports, as I said, I'm keeping it Hamilton. And then I'm keeping it India. All text values, so this will be there. Then comes rating. Let me give a rating of B. And then comes bonus. Let me be 10,000. नंबर था इसीलिए मैंने वो नहीं दिया, कोट्स नहीं दिया. ठीक है. एंड देन फॉलोड बाय लेट प्रिंट डीएफ. क्या स्टॉक बंद करना पड़ेगा. प्रिंट डीएफ. So let's run it all and let's see whether my 107 has been added or not. Right? या तुम सिंगल सिंगल कमांड अभी कर लो, लेटर यू कैन. एक बार तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा ना बेटा. देन यू मे ऐड द डेटा एंड प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन. मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज ही दूंगी, सो साइमल्टेनियसली यू डू इट. Okay, अदरवाइज ma'am. इट विल टेक टाइम, है ना. दिस इंसर्ट यू वर एबल टू डू. Yes, ma'am. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आपको हर एक क्वेश्चन करने के बाद उसके कोड के साथ साथ जो ये आ रहा है डेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में पेस्ट करना है. डोंट फॉरगेट दैट. Okay, ma'am. ठीक है. यू नो हाउ टू द प्रिंट स्क्रीन. यू हैव Yes, अ, ma'am. हाँ, यू हैव अ कीबोर्ड हियर, आई मीन की हियर. तो आपने 11th में भी किया है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. चलो, सो दिस इज डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट. नो,
I need to keep it. हाँ ठीक है, print हटा दूंगा. Now the next question was, I think, adding a column. So let's quickly do that. Add, no, display the top three records. So यहाँ पे display के लिए हम लोग अपना head tail वाले commands practice कर लेंगे. So top three means ऊपर से जाना है तो head, अगर बोलता है last three तो tail, और उसके ब्रैकेट में we just have to keep the number. How much? By default it is 5. अगर मैं बोलूँ print df dot head, तो first 5 records are shown. And now we have that with us. हमारे पास 6 records हो गए. So अभी मैं check it up. First 5 has come. ठीक है, बट हमें तो 5 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए. तो हमें 5 से वेरिएशन करना है उसको, which could be thousands also. You have to give a parameter in the head ka half circle brackets. So here I want top 3. So my answer is head 3. And then I'm going to execute. I get the first 3 records. Done? Yeah. Okay. चलो next करते हैं. Now add a column to store. I showed you. You have to add a column here. तो ये यहाँ पे आएगा आपका column. And that's directly with the square brackets. Indexer, no need to use LOC. No need to use ILOC. कॉलम ऐड करने के लिए easiest is single square brackets. कॉलम एक्सेस करने के लिए easiest is single set of square brackets if you are using single column. Multiple set of square brackets if you are using more than one column. मुझे स्पोर्ट्स भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए, रेटिंग भी चाहिए. सो डीएफ 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाला, बिकॉज एक स्क्वायर ब्रैकेट आपका इंडेक्सर का काम करेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट आपका लिस्ट का काम करेगा. ठीक है, सो उसको उसने इस तरीके से आपने लिखना है उसको डबल टाइम्स. Right, so let's move on to this particular thing now. And what have I added? I've added some coach names. I'll show you the code. Yeah. अभी तुम ABCD करके डाल के रख लो, that will be fastest. So df.coach, if I also do it that way only. And because it's not giving you any output directly, so no print here. हर कमांड के साथ प्रिंट आपको सोच के देना है कि वो कोई आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है. ठीक है ना. लाइक हमने जब रिकॉर्ड ऐड किया, हमने प्रिंट नहीं डाला, बिकॉज इस स्टेटमेंट का कोई आउटपुट नहीं है. सो प्रिंट इज यूजलेस देयर. ठीक है. सो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट coach. I keep the caps lock open and then I add the coach names. I need coach names for 7 records if I'm not wrong. 1001 set. So I'm just giving it as A, comma B, comma C, comma B, comma E, comma F, comma G. 1, 2, 3. Oh, here the codes have gone wrong. Be careful about the codes. It's 7. It's done. Let's see. Print DF. And let's see whether we get an error or whether we get the data correct. So we have added a new coach. Right? हुआ? Yes, ma'am. पक्का ना? Ma'am, doing. Yes, अच्छा. ma'am. हाँ चलो. I'm going a little faster because ये 40 minutes में खत्म हो जाएगी class. I just want to finish all the commands at least. चलो अब next है. Yes, ma'am, done. Done. चलो great. Ma'am, in AI board, we don't have any gap. I don't have any gap. You have AI and then after that which exam? Ma'am, on 23rd, I have pol science, and on 24th, I have AI. You have gap before. 24th. Yes, ma'am, I have 23rd pol and 24th AI. I know they've not given a gap for AI with Yes, ma'am. CS also. It's very. So keep your preparation done beforehand. That's what we can say. Yes, ma'am. An option to do. Okay, chalo, quickly let's do this. So we have done head also. We have done addition of the coach also. Then we move on and we do
डिलीशन। मैंने कोच को ऐड किया है तो हम कोच को ही ड्रॉप कर रहे हैं। सो ड्रॉप का क्या कंसेप्ट होता था? डीएफ डॉट ड्रॉप, कौन सा कॉलम नेम, सिंगल कॉलम है तो लिस्ट की जरूरत नहीं है तो नो स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिलीटिंग अ कॉलम, बिकॉज एक्सेस बाय डिफॉल्ट जीरो होता है विच रेफर्स टू रो। बिकॉज हमें कॉलम डिलीट करना है तो आई हैव टू मेंशन एक्सेस इक्वल टू 1, then in place true because I wanted a permanent deletion. I think that's what the question says, that I want to permanently delete it. ये आपको थोड़ा एग्जाम में देखना पड़ेगा। हाँ, delete the coach permanently. Okay, so this is how the code is going to work for you. df dot drop coach, अगेन इसका भी कोई permanent deletion का कोई आउटपुट नहीं आता है, right? So you will not use a print statement there. ठीक है, so ये हो जाने के बाद हम लोग प्रिंट बाद में करके देखेंगे। सो आई एम पुटिंग डाउन द प्रिंट बिलो एंड आई एम एडिंग द कमांड हियर, df dot drop half circle open, name of the column again with the quotes followed by access। access बहुत जरूरी है, वरना वो इस कीवर्ड को, ये कोच को ढूंढेगा वो एज एन इंडेक्स इन द रो, और रो में इंडेक्स तो है नहीं, हमारा रो इंडेक्स इज दिस। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी पिक्ड अप एंड देन वी राइट इन प्लेस। ये आपको प्रॉम्प्ट भी देता है एक्चुअली इफ यू डू इट इन, बिल्कुल। इसके बाद we'll check the output of the print कि इसने delete किया या नहीं किया। Now there is an error. What happened? Yes, can you tell me what's the error? I have written coach in small case here and here the data is in capital. ठीक है, ओके इसीलिए मैम। I prefer to put everything in small case only, otherwise हम उसको capital small ही करते जाते हैं। So I have to put it in capital, otherwise it is giving me the error that key error, key मिला नहीं इसको, है ना, बिकॉज वो केस सेंसिटिव सर्च करता है। चलो अब इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं एंड नाउ यू कैन सी माय डेटा फ्रेम इज नॉट हैविंग द कोच कॉलम, इट इज रिमूव्ड। लेकिन प्रिंट यहाँ नहीं डालना ड्रॉप करते टाइम, उसके बाद आपको प्रिंट करके चेक करना। टेम्पररी होता तो हम प्रिंट करके देख लेते, बिकॉज आफ्टर ड्रॉपिंग वो कैसा दिखता है उस स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है, परमानेंटली एप्लीकेबल नहीं है। बट यहाँ पे बिकॉज इट्स अ परमानेंट डिलीशन, आई एम गोइंग टू कीप इट विदाउट द प्रिंट स्टेटमेंट। चलो अब नेक्स्ट है हमारा, आई हैव टू चेक द नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज, कितने मिसिंग वैल्यूज है इसके अंदर। सो फॉर दैट वी हैव इज नल फंक्शन फॉलोड बाय सम फंक्शन। गिव मी द काउंट ऑफ नंबर ऑफ नल वैल्यूज। इज देयर एनी नल वैल्यू, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, तो वो ट्रू फॉल्स में आंसर करता है। क्वेश्चन सॉरी, check whether the data set has null values or not and remove the records that have missing values. I've taken these two from that first portion of the chapter where we talk about this part. ठीक है, so let's see trying for that null वाला, करो try print के साथ directly, no need to have the text as of now, वो तुम बाद में कर लेगा। df.isNull.sum ओके, देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। df.isNull, do you have any null values और कितने हैं वो, this is the meaning of this statement। प्रिंट के साथ डायरेक्टली लिखा है तो आई विल गेट द आंसर। That's going to give me this two, उसमें मुझे null values दिख भी रहा है, so I can easily check out that whether my answer is correct or not। ठीक है, I'll just take the screen down। So column wise it is showing me p name में कोई null values नहीं है, sports में नहीं है, country में नहीं है, rating में एक null value है, bonus में एक null value है। And you can see that rating में एक null value है, bonus में एक null value है। ठीक है, ज्यादा होते तो अकॉर्डिंगली काउंट करके सम करके दिखा देता। तो दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट शो मी द काउंट ऑफ null values
in the data. So column wise it shows me. Right? Now the next one. At any point of time, if you have you want to check there are any none values or not directly, तो हम लोग डॉट एनी करके भी चेक कर सकते हैं. ओके मैम. ठीक है. सो लेट्स ट्राई फॉर दीज टू कमांड्स ऑल्सो. सिर्फ अगर मैंने बोला इज नल, मुझे इज नल है या नहीं चेक करके बता, तो वो क्या बोलता है. तो हर एक इनपुट को लेके एवरी प्लेस फॉल्स 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 फॉल्स, और जहां पे आपका होगा वो ट्रू. दिस लुक्स वेरी ओवरवेलमिंग एक्चुअली, दैट इज वाई हम लोग सम या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, और जिससे कि वो मुझे एक इन टोटालिटी बता दे कि भैया है या नहीं है. अदरवाइज इफ इट्स अ ह्यूज डेटा देन यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू फॉल्स 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 फॉल्स, कहीं पे ट्रू है या नहीं. डेफिनेटली दैट्स इरिटेटिंग फॉर अ बिगर डेटा सेट. ठीक है. तो इसीलिए बट द पर्पस ऑफ इज नॉलेज टू चेक and return you the answer in Boolean for every entry, whether it is having any null values or not. And if I make it dot any, so let's see that output also. That is again column wise. So pname में false, there are no null values, sports में false, country में false, rating और bonus में. So इस तरीके से you can check out डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. आपको एक काउंट चाहिए, आपको सिर्फ ये जानना है कि उस कॉलम में है या नहीं है ना. तो इस तरीके से हम उस चीज को कर सकते हैं. तो दीज आर द ways we can check. So display the number of missing values we have done. Next I wrote for check whether the data set has null values or not. That is the H part. So dot any करके भी कर सकते हो, dot is null करके simply that also you can do. And remove the records that have missing values. For that what are we exactly doing? Drop any. तो वो पूरा पूरा रिकॉर्ड हटा देगा. अब वो पूरा रिकॉर्ड हटाता है नाशा, ये ध्यान रखना. वो एक इस तरीके से वैल्यू नहीं हटा सकता ना, वो पूरा ये चीज हटाएगा. तो जिस भी रो में कोई भी नल वैल्यू है दैट रिकॉर्ड इज रिमूव्ड. लेट्स चेक फॉर दिस वन ऑल्सो. और मैंने इसको रिमूव करा के आई हैव ट्राई टू स्टोर इट इन अनदर डेटा फ्रेम सो दैट योर डेटा फ्रेम इज नॉट अफेक्टेड. ठीक है. बट यू मे रीराइट इट ऑन टू योर ओन डेटा फ्रेम ऑल्सो. वापस डीएफ में लिख दोगे तो आपका ओरिजिनल डेटा रिप्लेस हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई दिस टू. Now there are null values we have seen. Now let's ask him to drop. So drop NA. Drop कर दो records जहाँ पे NA है. Print is not applicable for that. I'm going to store it in another one. एक df1 बना देंगे, वो एक और डेटा फ्रेम बना देगा. और फिर हम प्रिंट डेटा फ्रेम बंद करके देखेंगे कि मेरे वो वाले रिकॉर्ड्स रिमूव हुए या नहीं हुए. सो आई एम रिमूविंग द फर्स्ट डीएफ. Okay. And my original data only has, so I'm as of now removing it so that you can see the output clearly. I just added a record and then I'm checking for the drop in. So you can see the fourth record has been removed and the sixth record has been removed. एक में शायद bonus में था, एक में शायद rating में था. So that is my last part of the question. If I count them, it's like 1, then 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7, 8, 9 records, 9 questions. I think 10 questions they had said कि practical paired में होना चाहिए. So 9 are these and 1 is my visualization because that is also important. We have still little time. We can quickly do that too. इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, so I quickly revise the. I think I've taken the screenshot for that too. अब उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मैथप्लॉटलिब. ठीक है. मैंने यहाँ पे प्लेयर नेम और उसका बोनस, बिकॉज न्यूमेरिक वैल्यू एक ही है तो उसी को प्लॉट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ ऑल्सो. एंड सेम वी हैव डन इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ ऑल्सो. ठीक है. आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनी टेक्निकलिटीज एज सच, द डिफिकल्ट पार्ट्स इन दिस, जस्ट केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल. इस तरीके से हम कॉलम एक्सेस कर सकते हैं. तो मैंने कॉलम का डेटा पूरे पी नेम का लिया, एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया. बोनस का लिया, एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया. दिस विल बिहेव एज माय एक्स एक्सेस वैल्यूज एंड वाई एक्सेस वैल्यू.
वैल्यूज. डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेम कि एक्स एंड वाई ही रखना है. दे आर जस्ट वेरिएबल, दे कैन बी एनीथिंग. आप इसको यहाँ पे जैसे प्लेस करोगे दैट्स इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई प्लेस किया. यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. वो पूरा का पूरा कॉलम उठा लेंगे. सो लेट्स ट्राई दैट थिंग हियर टू. अब मुझे ड्रॉप पेने वगैरह करने के बाद ही सपोज चलो हमें करना. आई एम नॉट कीपिंग द प्रिंट टैग, right? And here I want to do it. So before doing anything else, I have to import the matplotlib here, right? So import matplotlib dot pyplot as plt. Tab say if you can pick up the references also, that'll be faster. जो करेक्ट रेफरेंस आ रहा है, सब कुछ नहीं पिक करना. ठीक है ना. मैथप्लॉटलिब इज द लाइब्रेरी, पाइप्लॉट इज द मॉड्यूल जो हम यूज करते हैं. एंड एज पीएलटी इज माई एलियास नेम. जैसे पीडी एलियास नेम है पांडास का, पीएलटी एलियास नेम है मैथप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट का. पूरा पूरा नहीं लिखेंगे हम बार बार. जहाँ पे पीडी लिखते थे तो पांडास की जगह पीडी लिखते थे. ऐसे ही हम लोग जहाँ पे मुझे इसको इन्वोक करना है इसकी जगह हम पीएलटी लिखेंगे. ठीक है. So I'm directly using the plt dot plot function. मैं कॉलम्स भी यहीं पिक कर लूंगी डायरेक्टली. ठीक है. सो प्लॉट बाय डिफॉल्ट गिव्स यू द लाइन ग्राफ ओनली. हम लाइन ग्राफ ही कर रहे हैं. लेट्स क्विकली डू इट बिफोर द सेशन क्लोजेस. सो df का स्क्वायर ब्रैकेट rename comma square bracket closed. Sorry, that's my x-axis data. Then df square bracket bonus. Okay. Then you can change the line style, color and everything you can do. That's given in that sheet. You can try out those parts. ठीक है. अभी हम यहाँ पे by default देंगे तो blue लेता है. If I want a green color, I'll just add this G here. You can have markers also. You can change the line style to dotted, dash, all that you will. Fine. This is the minimum thing. Then you put the titles. PLT dot title. Whatever title you want to put. अभी मैं graph खोल रही हूँ. Graph for bonus. That's your creativity. And then the two ones which are important. इसने खुद ही पिक कर लिया. So I'm picking it up. X label is my player name. See, it's so intelligent. Y label is my bonus. तो x के x एक्सेस के लेबल में ये आ जाएगा, y एक्सेस के लेबल में ये आ जाएगा. एंड देन plt show. Let's quickly do. I have less than 1 minute to cover. Now there is a problem. Oh, capital and small issue. All these things are in capital, so I have to be careful about that. ठीक है. Let's run again. And my graph is ready. तो ऐसा कोड देके ग्राफ बना के यू पिक इट अप. आई थिंक बोनस कहीं पे नल था और मैंने ड्रॉप पेन हटा दिया था. नहीं, ड्रॉप पेन तो था. दिखा रहा. Anyway, just check it up once. I don't have more time